So very good afternoon to all of you and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about the Election Commission of India. And I'm sure you must be aware that Election Commission of India has been very much in the news in the last 2 weeks, 3 weeks, especially with regards to SIR, that is Special Intensive Revision. Then Mr. Rahul Gandhi's allegation on Election Commission of India and the clarification or the press conference done by Election Commission. So these things were very much in the news. आपने देखा होगा ये सब चीजें काफी न्यूज में थी जिसमें इलेक्शन कमीशन और इनफैक्ट एक और बात आ रही थी जिसमें इलेक्शन कमीशन के रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की बात हुई थी. हैव यू रेड दैट आर्टिकल वेयर द ऑपोजिशन पार्टीज वेयर planning to bring a removal motion against the chief election commissioner? Have you read that article? पढ़ा है आपने? Yes. Good afternoon, everyone. आवाज आ रही है? Everything is clear? Yes. Fine. तो इसीलिए election commission of India becomes very important. Okay. So let us discuss. अच्छा एक दो चीजें. Some people were requesting about a class on SEO summit. Yes. Next week we'll be having a class. ठीक है. तो मैं इसको और भी चीजें देख रहा हूं उसके बाद आई विल शेड्यूल अ क्लास नेक्स्ट वीक. ठीक है. नाउ लेट अस बिगिन. सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट and go to the live section. We had discussed about SIR in Bihar, a special intensive revision. Please watch this class because this has also been, this topic was very much in the news. पिछले कुछ दिनों से ये काफी ज्यादा न्यूज में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. तो ये चैनल पे लाइव सेक्शन में जाना तो यहाँ पे मिल जाएगा. ओके. एंड विद रिलेटेड विद SIR टॉपिक इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट आल्सो. So let us begin with the first question. Which of the following is correct about ECI? बताइए. ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए. Statutory body, constitutional body, neither statutory nor constitutional. Initially a statutory body and later became a constitutional body. क्या सही जवाब है? What is the right answer? Yes, Nandini, Karthikya, Chandralekha, Adrija, you all right. So it is a constitutional body since beginning. है ना? So D is not correct. ऐसा नहीं था कि पहले statutory body थी फिर बाद में constitution बन गई. No. Since the beginning, it is actually mentioned in the constitution and it is very important because it is a body which ensures free and fair election. And why it is important? If there is no free and fair election, there is no meaning of democracy. So that is why the constitution makers ensured that the Election Commission of India should be independent, should be given strong powers so that it should not be influenced by the government or anyone else. Right? ठीक है. ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए, है ना? So that is what the idea is. So B is the right answer. Which article of the Indian Constitution gives power to the Election Commissioner of India? कौन सी एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जो सब पावर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? मेन. हाँ 324 तो 329 करेक्ट है, बट जो मेन आर्टिकल है वो 324 इज देयर. यस. अद्रिजा, कृषि, सचदेवा, कार्तिकिया, चंद्रलेखा, यू ऑल राइट. सो यू कैन सी इट हियर, है ना? द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल. यही SIR के बारे में आई हैड डिस्कस्ड हियर, है ना? तो ये मैंने SIR वाली क्लास में डिस्कस किया. प्लीज वॉच दिस इफ यू हैव मिस्ड. अगर आप मिस कर गए तो इसको जरूर देख लीजिएगा. ओके. सो दैट इज द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. प्लीज डू नॉट बी इन अ हरी. थिंक इट एंड आंसर इट. ये है क्वेश्चन यहां पे. दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर.
I'm expecting everyone to answer. Yes, very good. Krishi Sasdeva, you have explained it perfectly. Yes, Chandralekha, Adrija, Kartikya, you all right. So basically, president, vice president, Lok Sabha, Raj Sabha is parliament, and legislative assembly and legislative council is called as state legislature. So top 6 actually. So the answer here is option C. And the rest 4 is actually the state election commission. It is a separate constitutional body that conducts election. You should know it is also a constitutional body, right? Okay. C is the right answer. Very good. Kartikya, Adrija, you all right. Huh? Yes. तो आप देख सकते हो when you read article 324 it says superintendence direction and control of preparation for electoral laws and the conduct of all elections to parliament, state legislature, president election and vice president election. ठीक है, तो आपको 4 लग रहा होगा, बट इसके अंदर 2 हाउस होते हैं, इसके अंदर 2 हाउस होते हैं, although every state do not have both the houses, but that is the idea, है ना. ठीक है, क्लियर है. तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि टॉप 6 आर एक्चुअली द वंस व्हिच आर फॉर व्हिच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन. This has to be very crystal clear. The next is state election commission is a statutory body, constitutional body, neither of the two made with a presidential order. अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, just few minutes back I told you. State election commission conducts election at 3rd tier government level, है ना, 3rd tier level. So the right answer is constitutional body. B is the right answer. And there are 2 places where it is clearly mentioned. Article 243K, which talks about election to panchayats, and 243ZA, which talks about election to municipalities. तो ये village level पर है, village areas में, और ये cities में. जैसे for example BMC जो है ना मुंबई का की है ना, and similarly MCDs for Delhi, and village में पंचायत वगैरह होता है. So these all are conducted by state election commission, and a state election commissioner is equivalent to the Supreme High Court judge, है ना, similar to that, है ना, मतलब उसी के equivalent माना जाता है generally. Okay, let's move on to the next one. Election Commission of India is a dash member body. 3521. Yes. हाँ, अभी के बारे में पूछा बिकॉज इज लिखा है, यानी आई एम आस्किंग टुडे, करंटली. पास्ट में नहीं पूछ रहे, अभी बताइए अभी का क्या. So we are having 3-member body, a chief election commissioner and 2 election commissioners. So A is the right answer to this question. Yes, Kartikya, Adrija, Nandini, Chandralekha, you all were right. ठीक है. Now we are having the next question. The dash mentions that Election Commission of India would be a 3-member body. Constitution, parliamentary law, presidential order, none of the above. देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे थे. वो 73rd 74th अमेंडमेंट के टाइम पर ही ऐड हुआ था 243K और ZA. Chandralekha, that you are asking the question, they were added during 73rd and 74th amendment only. So कहां पे mentioned है? This is actually the result of a presidential order. Yes, Adrija and Chandralekha right. C is the right answer. देखो आप देख सकते हो. The article, the constitution says that there will be an election commission consisting of a chief election commissioner and such other members as decided by the president. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे.
बाकी कितने मेंबर्स रहेंगे वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से. ओके, so before 16th of October 1989 there was only one member, so presidential order notified 3 members but the 2 additional election commissioner. Then 1 January 1990 again it went back to the single member, and 1st October 1993 again it was brought to 3 member. Okay, ठीक है. तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, बट जो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर है दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, सो प्रेसिडेंट हैज पास्ड आउट, राइट? ओके, यस, लेट्स मूव ऑन. हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अच्छा, आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड ऑल हैव वन वोटिंग पावर, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कास्टिंग वोट होता है. व्हाट इज कास्टिंग वोट? Yes, Mr. Gyanesh Kumar, he is the Chief Election Commissioner of India. Yes, and he had I'm sure you must be aware, abhi recently this was an allegation made by Mr. Rahul Gandhi against Election Commission. Then the Election Commission of India did a separate press conference where Mr. Gyanesh Kumar was very much in the news. ठीक है. हाँ, कास्टिंग वोट तब होता, मान लीजिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है, एक रिटायर कर गए and there are only 2 members, one chief election commissioner and there is an election commissioner, and voting on a particular meeting happened where 1:1 happened because now it's even number, then again CEC can vote and decide the final decision. 3 member में तो होता नहीं है ना, 3 member में of course there is no scope of tiebreaker. Yes, right, casting vote उसको कहते हैं. Okay, that is what you should be knowing about. है ना? तो आपने देखा होगा 17th अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज डन, नेशनल मीडिया सेंटर. सो इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑन द लेफ्ट एंड द राइट आर द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. और बाकी जो है वो सब डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह भी होते हैं, उतना डिटेल नहीं जाना आपको, बस इतना पता होना चाहिए कि इट्स अ 3 member बॉडी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. Okay, so Mr. Gyanesh Kumar is the chief election commissioners, and the other election commissioners are Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi. Okay, that should be, you should be knowing. Now the next is, who was the first chief election commissioner of India? First chief election commissioner. I have not given the option believing that you should be answering it. Yes, Mr. Sukumar Sen. Yes, Kartikeya, Yash, Nandini, Adrija, Krishi, Chandradekha, you all were right. So you can see it here, Mr. Sukumar Sen. So he was the first chief election commissioner of India. The next one is, name the chief election commissioner who later on became a judge in ICJ, International Court of Justice. इसका headquarter कहाँ है? And it is one of the principal organ of United Nations. Anyone? Where it is headquartered? The Hague, Netherlands. Very good. अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. नेम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. फॉर्मर लिखना चाहिए, नेम द फॉर्मर, है ना. who later on became a judge in the ICJ, and more अगर और थोड़ा से बताए, who became a president of ICJ also. Yes, Mr. Nagendra Singh. Very good. So fourth point देख रहे हो, fourth में 1972 से 73 तक है ना. He was the chief election commissioner of India, who actually later on became 72 73 and 1985 से 88 he had served as president of ICJ, है ना. So that is what you should be knowing about. He was the first Indian judge at ICJ. ठीक है. Okay. Or we had discussed in this class ICC versus ICJ, International Criminal Court versus International Court of Justice. We had already discussed it. You can watch it. है ना.
Now the recent one is Mr. Gyanesh Kumar. Before him was Mr. Rajiv Kumar, like that. You should know. Let's move on to the next one. What is the process of removal of a chief election commissioner? Think and answer. मैंने ये सब बताया है keywords, so you have to be very careful. Please think carefully and then answer me. Impeachment बस मैंने लिख के छोड़ दिया. Same as that of impeachment, because impeachment only happens for the president of India under Article 61. ठीक है? So is it the same as that of that? No. तो A नहीं होगा आंसर. Same as that of removal of a Supreme Court judge. इसीलिए यहाँ पे मैंने removal को highlight किया था. Technically speaking, the word impeachment is not technically right for removal of a Supreme Court judge. The word used should be removal, which is mentioned in Article 124, Clause 4. ठीक है? Impeachment सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है इंडिया में. सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, हालांकि कॉमन पार्लेंस में यूज करते हैं. वी हैड डिस्कस्ड इट आल्सो. अब देखो आर्टिकल 324 क्लॉज 5 रीड. The chief election commissioner of India shall not be removed from his except in the manner similar to like grounds as a judge of a Supreme Court and conditions etc. ना जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरह से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है. Okay, that is what it is mentioned. So this is mentioned in Article 324 Clause 5. So to understand it, you have to go to Article 124 for removal of Supreme Court judge. ठीक है? So एकदम ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बात है, but you have to be very careful. Now the headline says opposition may move impeachment motion. Technically ये सही नहीं है. Removal motion is the right word to be used. However, in common parlance we use this. But since you are going to be the lawyer, you should know the exact correct words. ठीक है? Impeach is not a correct word to be used technically. Remove होगा. ठीक है? Removal होता है. And you go to the YouTube and search this removal of SC judge career launcher. You will get these two videos. ठीक है? Either of the two you should watch. ये यशवंत वर्मा साहब का removal process discussion में था, and removal of Supreme Court judge I have explained here. ठीक है? So exactly the same fashion, the chief election commissioner can be removed. Now the next is, what is the process of removal of an election commissioner? यहाँ पे chief नहीं लिखा हुआ है. Yes, removed by the president on the advice of CEC, Chief Election Commissioner. That is what is mentioned here. ठीक है? 324 clause 5. अब इसमें क्या है? इसमें अब देखो, so which is easy to remove, Chief Election Commissioner or Election Commissioner? Of course, it is Election Commissioner can be easily removed from this statement because president can pass an order just on the advice, and there is no guarantee that this recommendation is binding or not. But इसमें तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज टाइप का रिमूवल लेनी. यू हैव टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन रिमूवल मोशन इन द पार्लियामेंट. जजेस इंक्वायरी एक्ट विल बी सेट अप लाइक दैट. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना? तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है. तो उसके बाद क्या हुआ था? 2017 में पेटिशन वाज फाइल्ड, प्रोसीजर टू रिमूव इलेक्शन कमिश्नर्स वेग सेज प्ली इन द सुप्रीम कोर्ट. सो मिस्टर अश्वनी उपाध्याय had filed a petition 324 clause 5 that it is arbitrary removal only by the president, and just like तो petition ये दिया गया था कि the other two election commissioners should also be given a protection similar to the chief election commissioner, है ना? क्योंकि इसमें साइलेंट है ना, because understand it, ये तो बहुत आसान हो जाएगा रिमूव करना. It is very easy to remove election commissioner, right? Comparatively, right? Much easier, because just president will pass an order and they will say I have got an advice. So that is what, so petitions will file, all the matter is pending. ये वाली बात pending है. So ठीक है, that's what you should know. हाँ, वोटिंग वगैरह में सब सेम पावर्स होती है, राइट? कृषि सचदेवा
फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। हाँ, बस कास्टिंग वोट का पावर होता है सीईसी के पास, बट हाँ टेन्योर का प्रोटेक्शन से सीईसी को ज्यादा होता है, टेन्योर प्रोटेक्शन, because it requires a Supreme Court judge type removal process. But there is no such in case of election commissioner. What is the tenure of EC and CEC? Yes, B is the right answer. Yes, Chinmay, Chandralekha, Krishis, Deva, Kartikeya, Nandini. 6 years or 65 years, whichever is earlier. मतलब ये कि for example, if a person is appointed at the age of 62 years, then at the 65 years he will retire. Only 3 years of service. But if a person is appointed at the age of 56, the 56 plus 6 is 62. अभी तक 65 नहीं हुआ, so he will retire at 62 by having 6 years of service. दोनों में से जो हो जाए पहले उससे, है ना? So B is the right answer. So generally the practice is recently retired bureaucrats are appointed, or those who are very near to the retirement age, 58, 59, 60 के आसपास जो होते हैं उनको जनरली, या 60, 61 के आसपास जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है. ठीक है. The next one is the tenure of chief election commissioner is mentioned where? जो ये आपने बताया ये वाली बात, ये कहां मेंशनड है? Where it is mentioned? 6 years or 65 years? A is wrong answer. The surprising thing is that tenure is not mentioned in the constitution. The right answer is parliamentary law. B is the right answer. ठीक है. Election Commissioner Condition Services Act 1991. Later on 2023 में एक law आया that also gave the same thing, है ना? So that's what you should know. So B is the right answer. मैंने क्यों पूछा? Because I know it's difficult to think logically, कि आप logically सोचोगे नहीं constitution में होगा सारा protection वही मिला हुआ है ना? But no, it is not. ठीक है. So it's a sort of an exception type thing. तो आप कोशिश कीजिएगा याद रखिएगा, he cannot be reappointed, etc. Yes. Yes, and salaries and perks available to equivalent to the judge of Supreme Court. ठीक है, ये सभी पता होना चाहिए the chief election commissioner के बारे में, है ना? Both chief election commissioner and election commissioner, they enjoy the status equivalent to the, and state election commissioner enjoy status equivalent to a high court judge, है ना? The next one, देखो section 4 of this act. ठीक है, अब इतना लॉ वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए. It talks about this. That just have an idea that okay, the parliamentary law gives this 6 years or 65 years वाला बात. ठीक है. You can read. CC can be removed only like a Supreme Court judge by Parliament through removal is the right word to be used. है ना? It can be removed by the President on the recommendation. Okay, CEC act as a chairperson but cannot overrule majority. Yes, voting होता है. ऐसा नहीं है कि CEC के पास full power है, boss है, वैसा नहीं है. मतलब voting is there, है ना? The next is the appointment of chief. Yeah, this is the very very most important thing जो अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर दोनों का एक ही प्रोसीजर होता है. ठीक है ना? सो एंड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड इन द पास्ट आल्सो, सो वी विल डिस्कस इट. अपॉइंट कौन करता है? सीईसी और ईसी को? जितने भी सेंट्रल लेवल अपॉइंटमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट, जैसे सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी चेयरमैन, सब लोग आंख बंद करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये नहीं पूछ रहे कि किसके रिकमेंडेशन में, बट जस्ट आई एम आस्किंग हु अपॉइंट्स. आंसर इज प्रेसिडेंट. इवन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है? सो राइट आंसर इज ए. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन यू शुड आंसर. वोट होता है आर्यन, दैट इज रिकमेंडेशन. फर्स्ट यू आंसर दिस क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन.
ये बता दो। अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, किसकी राय पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जैसे वी डिस्कस ना कि हु अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जज, तो प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट डज नॉट अपॉइंट ऑन इट्स ओन, इट इज एक्चुअली डन बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम एडवाइस देती है, राइट। बट फाइनली इफ आई से आस्क who appoints the supreme court judge, the answer is president, not collegium. Collegium gives recommendation, but the final decision the supreme president appoints the judge. ठीक है। यस, अब हमको बताते 2023 से पहले, बिफोर 2023, द आंसर वाज ऑप्शन सी। मतलब ये होता था बिफोर 2023 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर, यूज्ड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एन इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। नाउ आफ्टर 2023 a supreme court judgment came somewhere in 2023 फरवरी मार्च के आसपास, which said that the president should appoint a chief election commissioner or the two election commissioner on the advice of a select committee comprising of option B, ये वाला, comprising of a prime minister, the chief justice of India and the leader of opposition in Lok Sabha or the leader of the largest opposition party. Okay. Now after that a parliamentary law was brought which changed this to this. In 2023 the parliament passed a law which removed CGI and brought union cabinet minister. So here I am asking is matlab today, so the answer is option A. ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दिस इज अनूप बर्नवाल केस, द जजमेंट केम समवेयर इन मई 2023। ठीक है। In this the Supreme Court said that these 5 judges said that the president should not be appointing election commissioner or two chief election commissioner on the advice of council of ministers. नहीं, ये नहीं होना चाहिए। There should be a select committee. This select committee should comprise of Prime Minister, Chief Justice of India and leader of opposition in Lok Sabha. ठीक है। So one from government, one from opposition, one from judiciary. ठीक है। What happened was later on this bill was brought and this was passed by the parliament. इसमें बस एक चीज चेंज कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो बस यहां पर सीजीआई की जगह देयर इज कैबिनेट मिनिस्टर। Okay, so here now we are having select committee comprising of prime minister, union cabinet minister and leader of opposition in Lok Sabha. अब इसमें ये हो गया these two are representative from government and one is an opposition. Okay, that is what you should be knowing about. The bill introduced to remove CGI from panel, यही आया था उस टाइम पर, हंगामा होता अगस्त 2024. So the constitution bench order came in May 2023 and in August 2023 this was brought and इसमें इसलिए आर्टिकल लिखा हुआ था कि it was an attempt to dilute the constitutional bench order. Okay, that is what you should know. Again this law was challenged. This law was again challenged in the Supreme Court. Of course, then again, why? What was the reason for challenging? The reason even though March 19 hearing चल रहा था. See, appointment to a president goes to the very root of democracy. Petitioners ने ये कहा कि again the same thing, if there are 3 members of select committee, one is a prime minister, the other is a union cabinet minister who belongs to the prime minister's party. Okay, and the third is leader of opposition. So of course these two will always be on one side and leader of opposition will be on other side. Is the class stuck? Okay, let me again speak. तो यहां तक क्लियर हो गया था? Is it clear? So the new bill came when the Supreme Court said a select committee होनी चाहिए. There has to be a select committee comprising of Prime Minister, Chief Justice of India and leader of opposition in Lok Sabha. Right? So Parliament brought a law. और इस लॉ में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर वाज ब्रॉट, इंस्टेड ऑफ सीजीआई देयर शुड बी कैबिनेट मिनिस्टर.
Okay, for recommending to the president the names. Now, तो ये मई में ऑर्डर आया and अगस्त में the parliament brought the bill. And the opposition started protesting because it will go against the election commissioner's neutrality, etc. तो इसमें तो then again this was challenged. ये वाले law को this was challenged the Supreme Court, this 2023 law, by saying that if you are appointing a chief election commissioner and having a select committee which comprises of prime minister, instead of CGI there is cabinet minister, and the third one is actually the opposition leader of opposition. Now these two will be on one side because cabinet minister is the minister of prime minister. उन्हीं के अंदर में मंत्री आते तो उन्हीं के साथ जाएंगे तो 2:1 हो जाएगा, means there will not be neutrality, etc. That is what the petitions were filed and the matter is being heard. Okay, but the thing is this law has not been stayed. इस law को stay नहीं लगाया गया, not stayed by the Supreme Court. तो जब stay नहीं लगाया गया है, so since it has not been stayed, then the current functioning will be this. तो अभी अगर पूछा जाए what is the procedure, so the president appoints the chief election commissioner or election commissioner on the appointment of a select committee comprising of prime minister, cabinet minister and leader of opposition Lok Sabha. ठीक है, is it clear? बहुत छोटी सी माइन्यूट चीज है, बट करंटली दिस इज द केस एंड इस पर अभी हियरिंग चली, आप देखोगे ये 16 अप्रैल का ये सभी न्यूज है, 19 मार्च. सो द मैटर इज स्टिल बीइंग हर्ड, इट हैज नॉट बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, स्टे नहीं लगाया गया. अब एक चीज और. नाउ सो हियर द आंसर इज ए. ये क्यों लिखा लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वाई स्लैश करके क्यों लिखा गया है? कोई बता सकता है? Look, I'll tell you why. सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? हाउ अ सीबीआई डायरेक्टर इज अपॉइंटेड? ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट विल अपॉइंट, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी. ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, विनीत नारायण केस बहुत फेमस हुआ था, उसमें कहा गया था. कोएलिशन प्रेसिडेंट नहीं, वो आंसर नहीं, मैं बताता हूं. सो उसमें कहा गया था कि द चीफ सीबीआई डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा. But to be a leader of opposition in Lok Sabha, you should have at least 10% of the total. 10% of 543 will be 55 seats minimum. Okay. But what happened जब एनडीए 1 थी, यानी मोदी जी का फर्स्ट टेन्योर था, so Congress did not, no party was having 55 seats in opposition. तो ये दोनों हो गया, ये खाली रह जा रहा था. तो कहा गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, कि चलो ठीक है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज नो वन हैज गॉट 10% सीट्स, तो जो भी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी उसी को चूज कर लिया जाए. एंड दैट इज व्हाई लेटर ऑन अमेंडमेंट वाज ब्रॉट टू इंसर्ट दिस लाइन. ये समझ में आया? इसका मतलब है कि he has not been recognized as leader of opposition because this person does not have even 10% of the total seats. ये provision लाया गया था. And the similar provision was brought here also. समझ? Is it clear? Because for you to have a leader of opposition in Lok Sabha, you need at least 55 seats. And it was not there when Modi ji की first government थी 2014 से 19. The Congress did not have 55 seats even. उससे भी कम था. So there was no leader of opposition. फिर प्रॉब्लम हो रहा था कि तो leader of opposition रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो फिर चेंज किया गया हर जगह और ये लाया गया लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? ये बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन क्लियर होना चाहिए. आई होप इट्स क्लियर, राइट? दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट यू शुड नो, है ना. पावर्स ऑफ ईसीआई आपको पता होगा, है ना. दे हैव द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस. इलेक्टोरल रोल, पहले तो इलेक्टोरल रोल जो एसआईआर जो हो रहा है, revision of electoral roll will be done by election commission. These 3 office 5-6 places है ना, ऑफिसेज में, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सब में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है. इलेक्टोरल रोल हो गया, है ना. रिकॉग्नाइजिंग अ पॉलिटिकल पार्टी एंड गिविंग देम सिंबल्स, ये भी इलेक्शन कमीशन का फुल पावर होता है. कौन से सिंबल किसको देंगे ना. इवन कभी कभी क्या होता है जब स्प्लिट लड़ाई हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल द लेट्स से द डिस्प्यूट ऑफ सिंबल,
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा शिव सेना इन महाराष्ट्र गॉट स्प्लिट, तो हु शुड बी गेटिंग द ओरिजिनल सिंबल, दिस फैक्शन और दैट फैक्शन, ये वाला कि ये वाला? This will be first decided by election commission. Then, of course, you can challenge the election commission's order in High Court and Supreme Court. Similarly, let's say NCP be split within, and Nationalist Congress Party is a political party in Maharashtra. It got split. So, who should be getting the original logo or the original symbol? That will be decided by election commission. Of course, you can file petition in the High Court challenging the order. That's a different matter. And then Supreme Court. फिर advisory power होता है ना? एडवाइजरी पावर्स लाइक डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह में होता है, ठीक है. इलेक्शन कमीशन कैन रिकमेंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, है ना, रिगार्डिंग लेट्स से होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाइक दैट, ठीक है. फिर और भी क्वाज़ी जुडिशियल पावर होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकती है एटसेट्रा, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो. देन रेगुलेटरी पावर्स भी होता है, इट कैन ऑर्डर रीपोल्स, है ना, एटसेट्रा. तो सो दैट इज व्हाट यू शुड बी knowing about. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.